के तो हम है लाइव। तो चलो, वो वर्टिकल स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। अगर मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ। के तो हम है लाइव। तो चलो, वो वर्टिकल स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ओके, ऑडियो इज ऑल्सो गुड। 11 लोग वेटिंग पे थे, एक ही दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं बीच बीच में चैट को अभी अ, ये करूँगा, रिप्लाई करूँगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं तो मेरा फोकस स्क्रीन पे ही रहेगा। तो जैसा कि कल हमने किया था, ये पहला प्रोसेस, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, अभी कल का रिवीजन मार देते हैं। तो ये रिसेंट में हमें दिखेगा कि ये जो कल हमने प्रोसेस बनाया था, सॉरी, तो ये रिसेंट में हमें दिखता है कि हमने क्या रिसेंट में कौन से प्रोसेसेस बनाए हैं। तो ये अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रोसेस है। देखो, अगर हम ये रन करते हैं वो हेलो पीपल वाला जो था, तो ये देखो, ये मस्त मैसेज बॉक्स आया है। हेलो पीपल, वेलकम टू पिक पॉइंट हब एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न न्यू थिंग्स। तो हम साथ में पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। जैसे कि लोग साथ में गेम स्ट्रीम करते हैं, वैसे हम लर्निंग स्ट्रीम करने वाले हैं। और इसको हमने पब्लिश भी किया था। पब्लिश हम यहाँ से ये पब्लिश बटन से पब्लिश करते हैं। उसके बाद जो है वो इस टाइप की स्क्रीन्स जो हमने कल किया था। अभी मैं कैंसिल करता हूँ इसको और फटाफट से एक बार असिस्टेंट, ये असिस्टेंट एप्लीकेशन है यूआईपाथ असिस्टेंट, जहाँ पे पब्लिश किए हुए प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। यहाँ पे हमें एक बार उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हमने कल किया था इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो, ये अपना फर्स्ट रन। देखो, कल हमने 3 बार रन किया था, तो ये आ गया। इसको हम ऐसे हिला भी सकते हैं चाहिए ऐसे। ओके करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। कल हमने 3 बार रन किया था, आज असिस्टेंट, ये असिस्टेंट से जो रन किया है वो डेटा यहाँ पे दिखाएगा। ओके, और ये आज हमने अभी रन किया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर है अपना बिल्ड योर फर्स्ट ऑटोमेशन प्रोसेस विद स्टूडियो। इसको हम करेंगे रिज्यूम। सो यहाँ पे पूरा कोर्स का ओवरव्यू है इस पेज पे। अबाउट दिस कोर्स, टेक्निकल प्रीरिक्विजिट्स क्या है, एक्सप्लोरिंग यूआईपाथ स्टूडियोज इंटरफेस का एक वीडियो है अच्छा खासा, और 2 पार्ट्स में पूरा प्रोसेस बनाया है उन लोगों ने, और थर्ड पार्ट में पब्लिश किया है। देन क्वेश्चनर है, जो कि हम हर बार गलत जवाब देते हैं, और मैं देता हूँ, सॉरी। और लर्निंग रिसोर्सेस और एंगेज विद कम्युनिटी, वो उनके दो रहते ही है चैप्टर्स। तो आप लर्निंग रिसोर्सेस पे और कम्युनिटी फोरम, जो उनका वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने अभी तक चालू नहीं किया है कम्युनिटी पे जाना। तो अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ये कम्युनिटी का पेज जो है उनका, वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर एक अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे। ओके, मेरे कैमरा क्लियरिटी अच्छी नहीं है, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, और उसके बाद मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट, या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो रिज्यूम कर सकते हैं। तो अबाउट दिस कोर्स, ओके, तो शुरू करते हैं। In this course, we will look at the business scenario and build the automation process in Studio to meet the requirements. If you are eager to automate your first process, this course will walk you through the steps from the start to finish. To make it easy, you will have videos to watch at your own pace as you build along. As a final step, we will publish the process to orchestrator, run it using the assistants. जैसे कि हमने कल वाला प्रोसेस रन किया था, वैसे ही ये भी प्रोसेस हम रन करेंगे असिस्टेंट से। उसका रिक्वायरमेंट दिया है वो सेम ही रहता है हर एक चैप्टर में। व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, हम क्या सीखेंगे इस कोर्स में। लोकेट एंड डिस्क्राइब द की कंपोनेंट्स ऑफ यूआईपाथ स्टूडियो यूजर इंटरफेस।
build a new automation process in Studio that consolidates data from multiple Excel reports into one and creates a pivot table and chart. अरे वाह! तो इस प्रोसेस में मल्टीपल एक्सेल शीट से डेटा कलेक्ट करके वो सिंगल एक्सेल शीट में डालेगा रोबोट, और उसके बाद उसका पिवट टेबल भी बनाएगा और चार्ट भी बनाएगा, एक मतलब पाई चार्ट रहेगा, नहीं तो फिर बार चार्ट रहेगा, वैसा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देगा हमें। Use Studio debugging capabilities to identify what caused our workflow do not work as expected। मतलब इसमें एरर भी आने की संभावना है, तो क्या एरर आ सकते हैं इसमें वो देखेंगे। Use if activity to decide what action is required next in the workflow। if activity ये नया है, if activity यूज करेंगे। अभी कोडिंग में if activity का यूज करते हैं, तो वो if activity अभी कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं हम। Run a published process with UiPath Assistant। Get the most out of this course by following and building along with the videos we provide before each demo। Input documents you will need। So input documents भी दिए हैं उन लोगों ने। Attempting to resolve the practice exercises without checking the solution but rather checking only hints first। If you get stuck, use the UiPath Studio documentation and the UiPath community forum to understand and find the answers। तो उनका कहना है कि आप लोग खुद से बनाओ, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो कम्युनिटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन का यूज करो। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस ऑन द UiPath फोरम टू हेल्प रिसीव हेल्प फ्रॉम द फेलो लर्नर्स। वो लगेज तो नहीं रिप्लाई करेंगे ना यार, वही तो प्रॉब्लम है। हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस कोर्स, प्ले द बिलो वीडियो टू लर्न। ओके, इस कोर्स से नेविगेट कैसे करना है वो तो हमें पता ही है, तो ये वीडियो देखने की उतनी ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। Before you embark on your learning journey, take some time to learn how you can navigate through the course interface and make the best use of the available features. An Academy course is made of one or several modules and at least one feedback survey. When you access a module, you'll first view the landing page, which displays its title and the content structure. You can begin the module by clicking the Start Module button. This takes you to the first lesson. You can also view the content structure for each module in the left panel. Each module is divided into sections, and each section consists of lessons. You can also navigate to any lesson by clicking the lesson title in the menu. Note that you can go through the lessons in any order, and you can revisit them at any point. Keep in mind that to complete a lesson, you must scroll all the way down until you see the button that indicates the title of the next lesson. You can check your progress of the module at 2 levels. If you're looking for a specific topic, you can use the search feature. Videos are played using a custom smart player, which provides several features. The Captions button enables you to switch off or display the captions in one of the available languages. You can also customize the way that captions are displayed by clicking the Captions settings. From here, you can increase or decrease the font size of the captions, and even choose between different colors and transparency levels for the captions text and background. If you prefer a faster or slower playback speed, you can change it in player settings. If the course consists of multiple modules, you can navigate to the other modules by clicking the previous or next buttons. You can also click the View Full Path button to view all of the modules available in the course. To complete a course, you must complete all of the modules that are marked required. After the course has been marked complete, please take the time to complete the feedback survey for the course that you've taken.
Completing the feedback survey helps us to understand any concerns that you might have about the course, and it'll help us to improve the course to your benefit. You're now all set to expand your learning horizons with UiPath Academy. Happy learning! ओके, सो इन्होंने पूरा कोर्स कैसा कैसा नेविगेट करना है, कहाँ पे क्लिक करके हमें क्या मिल सकता है, वो सब दिखाया है। और टेक्निकल प्री रिक्विजिट्स में क्या है वो देखते हैं। UiPath स्टूडियो इंस्टॉल ऑन योर मशीन, जो कि हमने कल ही किया है इंस्टॉल। बिल्ड अ न्यू प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच विद स्टूडियो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। अभी ये जो प्रोसेस हम करने वाले हैं वो अभी हम स्क्रैच से डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए क्या क्या सीखने को मिलता है देखते हैं। explore the studio features and capability as well as practicing and completing the exercises as a part of UiPath Automation Developer Explorer learning plan. So यहाँ पे भी उन्होंने लिंक दी है, जो कि स्टूडियो अगर आपने कल इंस्टॉल नहीं किया होगा तो इस लिंक पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं चैट में वो ये दे देता हूँ, UiPath एकेडमी। आपको बस क्लिक करना, टाइप करना है गूगल पे, और जो फर्स्ट लिंक आएगी uipathacademy.uipath.com वाली, उस पे जाके आपको लॉग इन करना है अपने गूगल अकाउंट से, और फिर आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाएगी। ओके, तो आप अगर न्यू है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो academy.uipath.com वाली जो लिंक है, तो इस पे सिंपली आपको जाना है। ये पूरी की पूरी लिंक मैं दे देता हूँ। तो इस पे जाने के बाद अगर आप सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल वाला जो ट्यूटोरियल है उस पे क्लिक करना है, वो हम पढ़ रहे हैं। और अभी रिज्यूम लर्निंग प्लान, ओके, तो ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे अभी। तो टेक्निकल प्री रिक्विजिट्स तो अपना हो गया। बी एक्सप्लोरिंग UiPath स्टूडियोज इंटरफेस, ओके। तो इसमें क्या मिलेगा हमें? Building something starts with making sure you have everything you need to start and finish it. The tools you use in the process are crucial. UiPath Studio enables you to have the fast start even without any previous development experience. Yes, that's why we are learning this. When building automations, UiPath Studio is a go-to tool as it encompasses all the features and capabilities you need to build automation solutions that meet the highest standards. No matter how large or small your automation team is, Studio will provide you with source control integration, custom code integration, advanced user interface automation, intuitive error handling, robust debugging tools, and more. Your first step in being able to use Studio as its full potential is to get well acquainted with its user interface. तो ये हमें सब देगा, पर उसके लिए पहले हमें इसके यूजर इंटरफेस के बारे में पूरी जानकारी पता कर लेनी चाहिए। Hello, and welcome to this video demo where we'll explore the UiPath Studio interface. We'll learn how to use the Backstage View options, create a new process from start, use the Designer, Activities, Properties, Output, and Data Manager panels, as well as running a Studio project in debug mode. All set? Great! Let's begin by looking at the Backstage View. Here we can create and open projects, configure Studio, or access help and license information. Let's explore the available tabs. We can click Open to browse a local automation project and open it. Click Close to close the automation project that's currently open. Click Start to create a new automation project or open recently accessed projects. Pin or remove projects from the Open Recent list. The Tools option enables us to launch the UI Explorer, Project Dependencies Mass Update tool, and the Repair tool for Microsoft Office.
Additionally, we can install a variety of extensions. Let's install the Edge extension for now. Next, let's check the plugins available in Studio. We can connect Studio projects to source control systems like GIT, SVN, or TFS when collaboration between multiple users is needed. We can enable or disable them on the Plugins tab. Additionally, Test Explorer and Test Manager are available as plugins for automation testing. To create a new project based on a template, we can use Templates. In this tab, we can view all available project templates, search and filter them by source. From the Settings tab, we can change the look and feel of Studio. Set global preferences, manage activities package sources, change local licenses, switch between Studio profiles, and enable or disable source control plugins. The Help tab directs us to product documentation, the Community Forum, Help Center, UiPath Academy, Release Notes, UiPath Studio Survey, and a quick step-by-step guide. Next, let's create a basic process by clicking Start and selecting Process. We'll name it Studio Interface. Supply a location, description, and select the compatibility. Note that when creating a new project in Studio, selecting compatibility based on the environment on which the project will be executed is essential. Windows compatibility uses .NET 5 with Windows support, and this is the default compatibility in Studio. Cross-platform compatibility uses .NET 5 with cross-platform support. This is needed for projects using robots on Linux. Windows Legacy uses .NET Framework 4.6.1, the compatibility used in releases before 2021.10. For this example, we'll select the default compatibility option with Visual Basic as language. Then click Create. Great! Now let's open the main workflow. UiPath Studio has multiple panels for easier access to specific functionalities. In the center of the screen is what we call the Designer panel. This is where the design of the process happens. The Designer panel displays our current automation project, enables us to make changes to it, and provides quick access to variables, arguments, and imports. Let's move to the Activities panel on the left. Here, we can search for activities by name and description using the search box at the top of the panel. For example, let's type in log message. This activity writes the specific diagnostic message at the specified level. Then just drag and drop it inside the main sequence. Adding an activity to our workflow is that easy in Studio. Sequences are the smallest type of project. They're suitable for linear processes as they enable us to go from one activity to another seamlessly and act as a single block activity. As best practice, make sure to include annotations at the top of every workflow, describing its purpose, and to rename all activities. Great! Another important part in Studio is the Project panel. The Project panel enables us to view the contents of the current project, add folders, open the file location, manage dependencies, and adjust project settings. We can copy and paste files from File Explorer directly into the Project panel, or just drag and drop on one or multiple files, including .xaml workflows. Clicking the Show All Files option shows all files belonging to the automation project, including the project.json. The File Explorer option opens the project location on the machine, while the Project Settings option opens the Project Settings window from processes or libraries. In Workflow Analyzer, a set of rules is applied to check for inconsistencies that aren't related to the project execution itself. The Test Manager setting can also be configured from here. Project compatibility is displayed in the Dependencies node. Project dependencies in Studio refer to packages linked to a specific project, holding activities. Hovering over a dependency shows us requested and resolved versions. Contextual actions like manage, repair, or remove dependency or import namespaces are available only for dependencies and not for their subpackages. To manage dependencies in a project, simply right-click the Dependencies category in the Project panel, and then select Manage. This opens the Manage Packages window.
with the Project Dependencies category. The green round icon shows which packages are currently installed. To add dependencies, we need to select All Packages first. Here we can search for new packages to add to the project. Please note that the available packages differ depending on project compatibility. Let's search for the PDF activity package and click UiPath.pdf.activity package. Now from the right side, select the latest version and click Install. Then click Save. The PDF Activities package has activities to get data from PDF and XPS files and store it into string variables. Next, let's move to the Designer panel and select the Log Message activity. The Properties panel is visible on the right side of the screen. It's contextual and enables us to view and change the properties of a selected activity. When selecting two activities in the same workflow, common properties can be modified. Let's select Info as log level and type in a message between quotation marks. Perfect. Now let's open the Data Manager panel. Here we can manage various types of data for our automation project. Data types include variables, arguments, and constants. We can also view and access orchestrator queues, processes, and assets, as well as connections used and namespaces. By clicking New from the Data Manager options at the top, we can create a new variable, argument, or constant. Let's create a new variable. We can supply here the name, select the type, scope, and default value. Let's name it Test Variable and click OK. We'll be able to see the newly created variable in the Data Manager panel. Great! Now let's move to the upper side of the screen to explore the ribbon. The ribbon is straightforward and can be minimized or expanded by clicking the Minimize or Expand button. The ribbon has the following tabs. Home is where we create and open projects, configure Studio, or access help and license information from the Studio Backstage view. Design is where we add sequences, flowcharts, and state machines to our project. Install and manage activities packages, build interactions with UI elements, export workflows to Excel, and publish our work to Orchestrator or custom feeds. An important aspect to consider is that wizards and UI Explorer aren't visible in the ribbon unless we install the UiPath UI Automation Activities package. Debug is where we debug our workflow while using debugging tools to set breakpoints, monitor the execution of activities step by step, and adjust the debugging speed. Open logs to view details regarding execution and any changes made to the project. The options available in the ribbon differ based on the general project design experience selected, modern or classic. To run a workflow or project, we have three options to choose from. Run Current File to run the current workflow, Debug Project to find and remove errors, and Run Project to run the whole project. Let's right-click the Log Message activity. Select Toggle Breakpoint. Then run the project in debug mode. Debugging is the process of finding and removing errors that prevent the project from functioning correctly. Debugging of a single file or the whole project can be performed both from the Design or Debug ribbon tabs. However, the debugging process isn't available if project files have validation errors. Breakpoints are used to purposely pause the debugging process on an activity which may trigger execution issues. Use Step Into to debug activities one at a time. The debugger opens and highlights the activity before it's executed. When used, Step Over doesn't open the current container. It debugs the next activity, highlighting containers, such as sequences, without opening them. Step Out is used for stepping out and pausing the execution at the current container level. Focus Execution Point helps to return to the current breakpoint or the activity that caused an error during debugging. Slow Step enables us to look closer at any activity during debugging. Execution Trail ribbon button is disabled by default. When enabled, it shows the exact execution path at debugging. If the Highlight Element option is enabled, UI elements are highlighted during debugging. If Log Activities option is enabled, debugging activities are displayed as trace logs in the Output panel. The Continue on Exception feature is disabled by default.
meaning that it throws the execution error, stops debugging, highlights the activity which threw the exception, and logs the exception in the output panel. When enabled, the exception is logged in the output panel, and the execution continues. The picture-in-picture mode runs in an isolated window session, thus allowing us to use the machine while the process runs. Remote debugging enables us to run and debug attended and unattended processes on robots deployed to remote machines. Using profile execution, we can identify performance bottlenecks in the workflow. It provides an analysis of the performance of all operations by providing us with a cumulative percentage of the execution time of each activity. Let's click Continue to finish debugging the project and examine the output panel. Here we can see the output of the log message, write line activities, and package exceptions. From the output panel, we can show or hide messages that have different log levels, errors, or warnings by clicking the buttons in the panel's header. Double-clicking a message displays further details about it, having the option to copy the information. We can now save and close Studio. Let's do a quick recap of some of the most important aspects that we've covered in this demo. When creating a new project in the Studio profile, selecting compatibility based on the environment in which the project will be executed is essential. The Data Manager panel allows us to manage various types of data in our automation projects. Debugging of a single file or the whole project can be performed both from the Design or Debug ribbon tabs. However, the debugging process isn't available if project files have validation errors. Breakpoints are used to purposely pause the debugging process on an activity which may trigger execution issues. From the output panel, we can show or hide messages that have different log levels, errors, or warnings by clicking the buttons in the panel's header. Great! This concludes our walkthrough of the UiPath Studio interface. Can you recall how to debug activities one at a time? Thank you for watching. And until next time, happy automation! ओके, तो उसमें डिबगिंग कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब उन्होंने बता दिया है हमें। क्या हो गया? ओके, सॉरी गाइस। चलो नेक्स्ट है अपना एक्सप्लोर UiPath Studio Web. Studio Web lets you automate right from your browser. No setup needed. Build and run automation directly in your browser. No installation needed. Design cross-platform workflows that work across different systems. Use rich set of built-in activities and templates to speed up automation development. Collaborate easily with others through cloud-based project access. Seamlessly integrate with UiPath Automation Cloud for publishing and management. To access Studio Web, तो यहाँ पे स्टूडियो वेब है, तो एक बार हम देख लेते हैं। उस पर हमें डिज़ाइन नहीं करना है, बट फिर भी हम एक बार उसका देख लेंगे यूज़र इंटरफेस कैसा है। ओके, क्लाउड वर्क स्पेस पे है, ये लोकल वर्क स्पेस है। अगर क्रिएट न्यू करेंगे तो वो खुल जाएगा। चलो, बट अभी हमें इस पर करना नहीं है, तो इसमें अटकेंगे नहीं हम।
स्टूडियो इंटरफेस जिप फाइल, जो उन्होंने एक छोटा सा प्रोसेस बनाया था हेलो वर्ल्ड वाला, तो उसका जिप फाइल भी है यहाँ पे। Few more explanations on the compatibility and language of a new automation process. Compatibility. When you create a new project, select the compatibility based on the environment on which project will run. Windows uses .NET 8 with Windows support. This is the default option. वो default है. Windows Legacy uses .NET Framework 4.6.1. The compatibility used in releases prior to 2021.10. It is no longer available. Okay. Cross-platform uses .NET with the cross-platform support enables building automation that can run on multiple platforms and are required for serverless execution in Automation Cloud. नोट क्या है? सर्वरलेस सपोर्ट ओनली क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म किया तो ही सर्वरलेस पे जाएगा वो। दे आर मैनेज्ड बाय UiPath एंड आइडियल फॉर ऑटोमेशन विदाउट UI इंटरेक्शन सच एज डेटा प्रोसेसिंग और API कॉल्स। अच्छा, विंडोज एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोसेसेस रिक्वायर्ड ऑर्केस्ट्रेटर 2021.10 भी कह सकते हैं हम उसे, एंड न्यूअर टू रन language. When you create a new project in Studio profile, you can select which language to use for expression, either VB means Visual Basic or C Sharp. The use of both Visual Basic and C Sharp expression in the same project is not supported. दोनों में से एक ही यूज कर सकते हैं. Neither is the use of Visual Basic expression in C Sharp workflows and vice versa. वो एक दूसरे में मर्ज भी नहीं कर सकते हम. When you copy and paste activities from other projects, invoke or import workflows, make sure they use the same language as your project. An important mention here is that projects that use the C# language for expressions are not supported in Studio Web. So C# यूज होता है complex workflows के लिए, और Studio Web पे हम complex workflow यूज नहीं कर सकते हैं. सो स्टूडियो वेब यूज ही मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, 5-6 GB की जगह लगेगी पर आप पूरा सीख सकोगे. यू कैन सेव C# प्रोजेक्ट टू क्लाउड बट यू वोंट बी एबल टू एडिट इट इन स्टूडियो वेब. उसको एडिट भी नहीं कर सकते. क्यों है भाई C# पे स्टूडियो वेब क्यों है? Lesson summary. The studio interface consists of backstage view, ribbon, command palette, panels, and status bar. The designer panel is where you add the activities to build your workflow. Debugging actions are available on debug ribbon tab. Run the file or project in the debug mode to use them. So debug mode जो है, अगर ये देखो ये debug है, ये ड्रॉप डाउन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये debug वाला ऑप्शन जो है इस पे debug होगा. तो अभी हमने ये कल वाला जो प्रोजेक्ट है वो debug मोड पे चालू किया है. ओके, सो अभी इधर कुछ हमें क्या बोलते हैं आया नहीं था, मतलब एरर नहीं था, इसलिए वो डीबग सक्सेसफुल हो गया है. उन्होंने हमें बोल दिया कि एग्जीक्यूशन एंडेड पर फर्स्ट रन वाज सक्सेसफुल. इसलिए अगर हम इधर ही कुछ ऐसा डाल देंगे तो देखो इधर ही एरर दिखाएगा हमें. तो अगर ये डीबग करेंगे हम, एरर वैलिडेशन एरर आया है. इसमें आया है मेन एक्सेल में. तो ये देखो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उन्होंने बताया कि इसमें है. ओके, ये देखो अगर ये जो नेम है वैलिडेशन एरर, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो पॉप आउट कर देगा कि एग्जैक्टली किधर एरर है. तो ये एरर अगर हम सुधार देंगे तो वो ये देखो इधर का आई मार्क भी चला गया. ओके, और इधर भी एरर 0 हो गया. तो अगर हम इधर डाल देते हैं तो इधर आ गया, देखो वैलिडेशन एरर वैलिडेशन एरर वैलिडेशन एरर, ये देखो इधर आ गया. तो इसी को हम निकाल देंगे तो वो सब पूरे 0 हो जाएंगे. ओके, इसको सेव कर देते हैं. नेक्स्ट, debugging actions are available on the debug ribbon tab. Run the file or project in a debug mode to use them.
You can use the data manager panel to manage the data in your project like variables, arguments and constants. So data manager जो है वो यहाँ रहता है, autopilot, properties, test explorer, outlier, profiling. डेटा मैनेजर किधर गया है? लोग डेटा मैनेजर किधर दिखा, तो ये देखो ये डेटा मैनेजर यहाँ पे है। ये देखो ये यहाँ पे आ गया डेटा मैनेजर अपना। सिस्टम एक्टिविटीज और ये सब, तो मैं वापस इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है, वो इधर वाला गायब कर दिया है उन लोगों ने। चले नेक्स्ट, द आउटपुट पैनल डिस्प्लेस द आउटपुट ऑफ द लॉग मैसेज एंड राइट द लाइन एक्टिविटी स्टेटस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, errors generated by the activities, packages and more. Next, अरे match the capabilities with their corresponding description. आपको पता है क्या? Purposely pause the debugging process on an activity which may trigger execution issues. Purposely pause. From the context, right clicking purposely pause वो toggle break point के साथ होता है ना. Identify and remove errors that prevent project from working correctly by running project in debug mode. देखते हैं. Update project dependency package from the output panel. No, from the properties panel by right clicking dependency. Dependency अगर update करना है तो by right clicking dependency, selecting manage and then updating needed version, updating them to the needed version. Okay, show or hide the messages that have different log levels, errors, warnings in Studio from the output panel, and view and configure properties of the selected activities from the properties panel. Okay, सब correct है अपना. Wow. Well done. Now let's start building. Never built an automation process in Studio before. In the next lesson, you will build your first process with step-by-step guidance. See you there. अब बीच करने वाले हम. Building the process. What you will learn in this lesson. Build a new automation process that consolidates data from multiple Excel reports into one and create a pivot table and chart. Understanding the business scenario. ओके सो कल जो मैंने बोला था कि किस टाइप की ट्रेनिंग आपको चाहिए, सिनेरियो बेस्ड, तो उन्होंने बिजनेस सिनेरियो दिया है देखो पूरा, और उस हिसाब से हमें पूरा लर्निंग अभी होगा अपना, और प्रोसेस भी डेवलप करनी है वही हिसाब से. In general, the automation implementation teams consist of a solution architects, project manager, business analyst, and automation developers. During the implementation process, our first step in workflow development is to understand the as-is current manual process and get the business approval before starting the development. The below business scenario is the basis of our first studio process, in which we create an automated process that meets the business needs. Okay, तो business scenario क्या है? Each day
ACM is sales department receives report from coffee shops in Excel format. A dedicated member of team extracts the data from each report, merges it into an Excel spreadsheet, and then creates a pivot table and a chart based on a merge data. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, तो अलग अलग एक्सेल शीट में रिपोर्ट आता है हर एक कॉफी शॉप से, और वो एक बंदा बैठ के सब कॉपी पेस्ट करते बैठता है, तो वो प्रोसेस उनको ऑटोमेट करनी है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी? स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस बाय इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड क्रिएटिंग अ सिंगल डैशबोर्ड व्यू। ओके, सो सारे रिपोर्ट से वो डेटा कलेक्ट करना है और एक सिंगल डैशबोर्ड टाइप व्यू बनाना है हमें। टाइमली रिपोर्टिंग allowing the sales team to take decision based on a real time data. Improve data quality. Okay, data quality भी improve होगी obviously. Automation will allow validation of the data from the coffee shops before it's merged and processed. If the number of shops increases, automation can be scalable to handle more data. Reduced manual efforts, risk mitigation. Automating the process will reduce errors that could happen when copying and pasting the data manually. Okay, here are the few steps to get sense of what is involved in automation implementation process. Capturing the as is and to be process steps. Usually in an automation project implementation, the business analyst is the one who captures all the as is and to be steps and any other documented details from the project, sorry, and any other documented details from the subject matter expert, which means SME and the business teams. Documenting the process steps. Afterwards, the process steps are thoroughly documented within the process definition document, PDD. PDD matlab process definition document, and validated with the solution architect. Signing of the PDD means it is the project manager's responsibility to obtain sign off on the documented PDD from the business team. प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस टीम से वो पूरा का पूरा अप्रूवल ले ले, साइन ऑफ मतलब अप्रूवल. Designing the solution. Once the business requirement of the process are finalized, the solution design stage of the implementation process begin. During this stage, the solution architect designs a future state flow and maps out the various modules to be developed to complete the automation. So वो सब पेपर पे डिजाइन करते हैं. ऑन पेपर मतलब पूरा कंप्यूटर पे डिजाइन करेंगे, पर वो पेपर वर्क रहेगा. Developing the solution. Next, automation. Next, the automation developer creates the module outlined in the design whiteboard using PDD and the solution design document. So PDD भी डिजाइन होगी और SDD भी डिजाइन होगी एज रेफरेंसेस, और उनको वो डेवलपमेंट के टाइम रेफरेंसेस की तरह यूज करेंगे. Workflow development begins on the to be processes step and diagram are approved and documentation of the process is completed. There are although some important aspects we should consider before diving in. Here are some examples. Deciding between attended or unattended automation is the first important decision. That impacts how we build the code. Making a change to the robot type later in the phase may prove be quite complicated. Choosing the correct type of layout for the project in Studio is also essential. We can choose from sequences, flowcharts, and state machines. We must also ensure that we have installed the required dependencies to use the activities needed for the automation. When developing workflows, we should also consider automation best practices such as using centralized knowledge repository, source control, workflow analyzer. ओके, सो किसी ने तो भी ज्वाइन किया है. कौन है भाई? Depending on the context, you might not always have a business analyst or solution architect working on the automation project. In this scenario, the automation developer would be the responsible for analyzing. So हर जगह पे solution architect, business analyst और project manager शायद से नहीं रहता है, तो वो डेवलपर की जिम्मेदारी है कि सब रिक्वायरमेंट्स ले, वो डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो बहुत सारा वर्कलोड रहेगा डेवलपर पे. And assessing the automation potential of the process steps.
Okay, so make sure you have following installed in Studio to build along. ओपन स्टूडियो, क्लिक होम, टूल्स, यूआईपाथ एक्सटेंशन, एक्सेल एड इन अपने पास इंस्टॉल है क्या, तो यहाँ पे जाना है, होम पे जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, उसके बाद यूआईपाथ एक्सटेंशन पे जाएंगे और एक्सेल एड इन वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ऐसा दिखेगा आपको, तो उसको बस सिंपली इंस्टॉल कर देना है। वो इंस्टॉल करने के बाद ऐसा पॉपअप आएगा, एक्सेल एड इन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। ओके, तो ये जावा वगैरह अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद ये तो एक्सेल हेडिंग कर दिया। आफ्टर क्रिएटिंग द न्यू प्रोसेस इंस्टॉल द यूआईपाथ एक्सेल एक्टिविटीज 2.16.1 पैकेज। फॉलो दिस स्टेप्स, गो टू प्रोजेक्ट पैनल, क्लिक द मैनेज पैकेजेस, सिलेक्ट ऑल पैकेज कैटेगरी, सिलेक्ट द यूआईपाथ एक्सेल एक्टिविटीज एंड इंस्टॉल 2.16.1 वर्जन। ओके, ये वाला वर्जन याद रखना है एंड क्लिक सेव। तो इसमें अभी ये 11 मिनट का है, इसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस डेवलप किया है, एक पार्ट है वो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। तब तक हम ये प्रोसेस बनाएंगे, चलो उसके साथ ही जाते हैं ना। Hello and welcome to this video on building our first process with UiPath Studio. The automation process that we're building merges data from multiple Excel reports into one and creates a pivot table and a chart based on the consolidated data. For a thorough understanding, we highly recommend following each step and building along in Studio. You can pause the video at any time to build at your own pace. All set? Great! Let's get started. Our first step is to create a new process. We'll provide a name and click Create. While the process is initializing, let's look at our input data. We have a total of 5 coffee shop reports, displaying data for the ये तो उन्होंने नया प्रोसेस किया, तो उसको नाम क्या दिया है, एक्सेल रिपोर्ट्स कंसोलिडेशन। अभी मुझे पहले है ना, एक बार मैं यहाँ पे मेरा है ऑलरेडी, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मतलब पूरा पहले से बनाएंगे अभी, एक्सेल रिपोर्ट्स कंसोलिडेशन। तो उसका पाथ मैं अभी टी ड्राइव में रखूंगा, टी ड्राइव में यूआई पाथ, click Create. क्लिक क्रिएट, क्रिएट। ओके, ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक वो क्या कर रहा While था। the process is initializing, let's look at our input data. ओके, सो इनपुट डेटा कहाँ पे है उनका, मतलब ये इंक्लूड डेटा है आई गेस, एक बार देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स जो है ये उनका इनपुट डेटा है, तो यहाँ से वो हमें कॉपी कर लेंगे और इधर एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन में जो है पे पेस्ट कर लेंगे। मेरे पास था ऑलरेडी ये वाला, बट ये अभी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये जो है ना डाउनलोड्स में, ये वाला जो है
इसमें वो पूरा ये जो मेन फाइल है, ये पूरा वर्क फ्लो उन्होंने जैसे डेवलप किया है वो अपने UiPath स्टूडियो में ओपन होगा। तो ये बस हम यहाँ से उठा के इधर अंदर डाल देंगे। किधर गया UiPath? इधर एक नया फोल्डर बना देता हूँ। सॉल्यूशंस बाय एकेडमी, इधर उसको पेस्ट करके रख दूंगा। ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम जाएंगे वीडियो पे वापस। We have a total of 5 coffee shop reports, displaying data for the item, unit price, items sold, and total income columns. ओके, तो अभी अपने पास है क्या वो सब? तो ये अपना भी मेन वर्क फ्लो रेडी हो गया है इधर। तो ये डेली रिपोर्ट्स, मोबाइल एडिटिंग, आइटम, यूनिट प्राइस, आइटम सोल्ड, टोटल इनकम ओके है अपने पास। और 1 2 3 4 5 फाइल्स भी है। ओके, Each Excel report file contains 10 records or rows. Perfect. Our process is now created. Before adding activities, let's add 2 new folders in our project. ओके। सो स्टार्ट करने से पहले ये देखो, अभी ये जो है यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ दिख रही है। मेरा कर्सर, अगर आपको ये हिलता हुआ कर्सर कर्सर दिख रहा है, तो ये देखो UiPath एक्सेल एक्टिविटीज़, UiPath सिस्टम एक्टिविटीज़ और UiPath UI ऑटोमेशन एक्टिविटीज़। तो वो अपने पास है क्या, एक बार चेक कर लेंगे। तो ये है एक्सप्लोरर, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे नहीं है वो एक्टिविटीज़ अपने पास। तो ये हम मैनेज, ये जो डिपेंडेंसी वाला टैब है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, ऑल पैकेजेस पे जाएंगे, UiPath, इधर हम सिंपली एक्सेल टाइप करेंगे। तो ये देखो UiPath एक्सेल एक्टिविटीज़ हमें दिखेगी। तो ये 3.4 वाला प्रीव्यू है, तो ये प्रीव्यू वाला नहीं करेंगे, ये 3.3.1 जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट जो है UI ऑटोमेशन, ये देखो UiPath UI ऑटोमेशन एक्टिविटीज़, ये वाला कौन सा वाला है उसके पास, UiPath.UI ऑटोमेशन एक्टिविटीज़, UiPath.UI ऑटोमेशन एक्टिविटीज़ ये वाला है। तो इसमें भी प्रीव्यू वाला नहीं लेंगे, ये नीचे वाला लेंगे, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा वाला कौन सा था, सिस्टम एक्टिविटीज़, एक्सेल एक्टिविटीज़ और UI ऑटोमेशन एक्टिविटीज़। तो सिस्टम एक्टिविटीज़ अपने पास है ऑलरेडी, ये देखो ये देखो ये सिस्टम एक्टिविटीज़ है। तो ये दो तो इंस्टॉल करने हैं और सेव करना है। जब तक सेव नहीं करेंगे वो एक्टिविटीज़ डाउनलोड नहीं होगी। ओके, सो ये अपना हो गया है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? The first folder to hold our input reports and the second folder to hold our output consolidated report file. To create the folders, we right-click the project name in the project panel, select Add, and choose Folder. Now let's ओके, सो वो इसी के अंदर फोल्डर्स बना रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर ही। यहाँ पे ऐड फोल्डर, उसको नाम क्या क्या दे provide a रहा है वो एक बार meaningful देख लेते name हैं। to save the input files. Next, we perform the same steps to create the folder to hold the output file. Now,
we'll open our input folder. डेली रिपोर्ट्स और सेल्स रिजल्ट, ये हम जैसे कि वैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसको हमें फॉलो करना है। डेली रिपोर्ट्स, ओके, डेली रिपोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है अपने पास, तो सेल्स रिजल्ट, ओके। सो डेली रिपोर्ट में ऑलरेडी कॉपीड है क्या? ओके, डेली रिपोर्ट में ऑलरेडी कॉपी कर दिया है। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी किया था ना, ये क्या ओपन हो गया भाई? तो ये देखो, ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिया था ना प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए वो हमें यूआईपाथ स्टूडियो में भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट। Daily reports, and add the 5 Excel files. Next, let's open the main workflow and start building. Since we're working with Excel files, let's add an Excel process scope activity. This enables us to select an Excel file to use in the automation using a Use Excel File activity. As best practice, we'll annotate this activity to describe our workflow. तो उसने क्या कमेंट डाली है उसको? क्रिएट्स डेली सेल्स रिजल्ट्स फाइल, add header, add individual reports, generate pivot table and chart। तो उसने एक्टिविटी चूज की है एक्सेल प्रोसेस स्कोप, हम भी ऐड करेंगे। ये इधर एक्टिविटीज पैनल है यहाँ पे। हाँ, तो अपना लेटेस्ट वर्जन है इसलिए हमें वो मेन वर्क फ्लो अपना डायरेक्टली ओपन हो जाता है। एक्सेल प्रोसेस स्कोप, ये देखो, ये एक्सेल प्रोसेस स्कोप एक्टिविटी ने किया, उसको एनोटेशन दिया, क्रिएट्स सेल्स रिजल्ट एंड डेली रिपोर्ट्स पिवोट, जो हमें समझ में आएगा वही कमेंट्स डालनी है। ऐड डेली रिपोर्ट्स, क्रिएट पिवोट टेबल्स एंड चार्ट। ओके, ओके, ये कमेंट ऐड हो गई। देन Next, we'll add the Use Excel File activity. ओके, तो हमें एक्सेल फाइल, इस ऑटोमेशन प्रोसेस में एक्सेल फाइल वो रोबोट यूज करने वाला है, इसलिए यूज एक्सेल फाइल एक्टिविटी हम लोग ऐड करेंगे। यूज एक्सेल फाइल, तो ये यूज एक्सेल फाइल ने ऐड किया। As a best practice, let's rename the activities. The workbook path requires us to indicate the location of the folder where we यूज सेल्स रिजल्ट एक्सेल फाइल, तो वो सेल्स रिजल्ट वाली जो फाइल है वो वाली यूज करेगा। तो हमें पहले वो सेल्स रिजल्ट वाली इंडिकेट करनी है। want to create and save our output file. थोड़ा The पीछे जाए। workbook path requires us to indicate the location of the folder where we want to create and save our output file. Since we've already created an output folder, let's indicate it by opening the Advanced Editor. Here we specify the folder name and the name of the Excel file that we want to create. As our output file stores the daily sales data for the 5 coffee shops, we'll include the current date in the file name. As a result, identification will be easier. For this, we are using datetime.now function, and we're going to convert the output of this function into a specific string format. At the very end,
we'll specify the extension of the file. Notice that we don't have to specify the full path, as we've created the folder within the project folder. Now click OK. In the Reference As field, we specify how we intend to refer to this file in other activities. Since we need to refer to the sales results file, let's run the process now. ओके, तो उन्होंने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में फोल्डर पाथ डिफाइन किया है, जो अपना सेल्स, ये वाला जो है सेल्स रिजल्ट्स, ये जो है ये हो गया अपना फोल्डर पाथ। उसमें फाइल क्रिएट करनी है सेल्स रिजल्ट्स नाम की, उसके ऊपर डैश रहेगा और उसमें उन्होंने एक्टिविटी ऐड की है डेट टाइम, ये देखो ये डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब वो जो ये फोल्डर है सेल्स रिजल्ट, ये फाइल का नाम होगा और उसके आगे फाइल के नाम के आगे डेट टाइम आएगी उस दिन की जिस दिन हम वो क्रिएट कर रहे हैं, और वो टू स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगी, टू स्ट्रिंग। देन उसने क्या किया, ब्रैकेट में डेट टाइम नाउ का वो फॉर्मेट कैसा चाहिए, वाई 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 कैपिटल में रहता है और डी और प्लस उसने दिया था फॉर्मेट डॉट एक्सेल एस एक्स, मतलब वो फाइल का फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, तो ऐसा हम लोग ऐड कर देंगे। और रेफरेंस क्या करेंगे, उस फाइल को आगे जाके क्या रेफरेंस से बोलने वाले हैं हम, किस नाम से बुलाने वाले हैं, तो वो सेल्स रिजल्ट्स। ओके, To create it, click Debug File, then Run. और उन्होंने रन किया है, इधर रन। ये देखो ऐसा प्ले बटन आता है जब भी वो क्रिएट होती है, तो क्रिएट हो गई है। The sales result Excel file has now been created. To later use it, we must click the Template File checkbox, navigate to where it's stored, and select it. Perfect. The next ओके, तो आगे जाके यूज करना है इसलिए उसको टेम्पलेट फाइल बोल के सिलेक्ट करना है और फोल्डर्स में जाके सेल्स रिजल्ट में जाके ये देखो ये ऐसी फाइल क्रिएट हो गई है, सेल्स रिजल्ट्स डैश 2026 टू 25। ओके, ये ओपन, तो ये इधर आ गया, तो आगे जाके कुछ भी सेल्स रिजल्ट में डालना होगा तो वो टेम्पलेट फाइल को रेफर करेगा। next step is to write the header or column names in the output file. For this, let's add a write cell activity. ओके, तो अभी देखो अपने पास ये सेल्स रिजल्ट वाली फाइल है, बट ये पूरी ब्लैंक है, बराबर। तो इसमें हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो हम हाथ से थोड़ी ना लिखेंगे, तो वो भी ऑटोमेट करेंगे। तो उन्होंने ऐड की है राइट सेल एक्टिविटी, तो एक्टिविटीज, हाँ हम सीधा यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। राइट सेल डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, राइट सेल एक्टिविटी उन्होंने ऐड की है। In the What to Write field, we enter the name of our first column, item, and in the Where to Write field, we select our sales results output file and indicate the cell where we want to write the column name. Here we select A1 and click Confirm. ओके, तो उन्होंने राइट सेल एक्टिविटी में व्हाट टू राइट में आइटम और वेयर टू राइट में ये सिलेक्ट करना है, ये सेल्स रिजल्ट के बाद ये देखो ये यहाँ पे हमने वो सब चेक बॉक्सेस ऐड किए हैं, टेम्पलेट फाइल जो हमने सिलेक्ट की है इसलिए वो इधर हमें दिख रही है। तो इंडिकेट इन एक्सेल, तो सीधा वो एक्सेल फाइल ओपन करेगा और उसमें हमें इंडिकेट करना है कि भाई तुझे कहाँ पे लिखना है। इंडिकेट इन एक्सेल, तो ये देखो ये सेल्स रिजल्ट 2026 25 तारीख की ओपन हो गई है, तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो वो यहाँ पे आके लिखेगा।
बट हमें लिखना है यहाँ पे, तो हम ये इसको कंफर्म करेंगे। तो उसने वो पूरा शीट A1 वगैरह वो सब ले लिया। ओके, राइट, आइटम हेडर सेल, और उसको उसने एक्टिविटी को रिनेम भी कर दिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए। राइट, आइटम हेडर, मतलब ये एक्टिविटी क्या करेगी, आइटम हेडर का नाम लिखेगी। Let's duplicate this activity as we must perform the same steps for all the column names that we want to write in the file. Renaming the activities helps us to better understand the process. ओके, तो वो यूनिट प्राइस बाजू बाजू में रहेगी। राइट, यूनिट प्राइस, राइट, आइटम सोल्ड, प्राइस, आइटम सोल्ड, और टोटल इनकम। ओके, Great! ओके, तो हम भी ऐड करेंगे। तो उसने उसको कॉपी पेस्ट किया है एक्टिविटी को, कॉपी पेस्ट, आइटम हेडर, उसने इसको दिया यूनिट प्राइस। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये जो अपने डेली रिपोर्ट्स है ना, उसमें अगर एक फाइल हम कॉपी करेंगे, वो उठाएंगे, ये देखो, यूनिट प्राइस, आइटम सोल्ड और टोटल इनकम, ये हमें चाहिए इस फाइल में भी ना, क्योंकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे लाएगा और उसके ऊपर से चार्ट बनाएगा। तो बाकी 5 फाइल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। सो यूनिट प्राइस कहाँ पे गया, हाँ, तो व्हाट टू राइट में यूनिट प्राइस, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ये बड़ा करके भी हम उसमें डाल सकते हैं। यूनिट प्राइस हमें चाहिए डॉलर्स में, यूनिट प्राइस डॉलर्स हो गई। कहाँ पे लिखना है वो, सेल्स रिजल्ट, इंडिकेट इन एक्सेल, और बी में यूनिट, इधर आइटम आएगा, इधर यूनिट प्राइस आएगा। ओके, देन अगेन पेस्ट कर देंगे। थर्ड वाला कॉलम क्या था, आइटम सोल्ड, तो इधर है आइटम सोल्ड, कहाँ पे लिखना है, इंडिकेट इन एक्सेल, वो सी में जाएगा, बराबर। ओके, कंफर्म, तो इधर आइटम सोल्ड सेल, देन अगेन पेस्ट, इधर आएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम सेल, टोटल इनकम ही है ना, हाँ, टोटल इनकम लास्ट वाला, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इधर लिखेंगे टोटल इनकम, और कहाँ पे लिखना है वो, सेल्स रिजल्ट, इंडिकेट इन एक्सेल, डी में जाएगा, आइटम, यूनिट प्राइस, टोटल आइटम्स, आइटम सोल्ड और टोटल इनकम, डी में। ओके, कंफर्म, ये अपना हो गया। Now that we've finished adding all the column names, let's format them into a header-like style using the Format Cells activity. In the Range field, we'll provide the range of cells that we want to format by indicating them in the Excel file. Next, using the Set Format option, we can set the data type, alignment, font, and fill color. Until now, we've created our output file, entering the column names, and formatted the header cells. As a next step, we'll ओके, नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले उसने क्या किया, फॉर्मेट सेल्स एक्टिविटी ऐड की, जिसकी वजह से वो पूरा जो लिखेगा और उसको फॉर्मेट भी कर देगा बाद में। फॉर्मेट सेल्स एक्टिविटी, ये फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट एज टेबल वगैरह वो अलग है। तो फॉर्मेट सेल्स एक्टिविटी में सेल्स रिजल्ट, यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है। अगर वो शीट 1 सिलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा शीट ही फॉर्मेट कर देगा वो, बट हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, बराबर। तो इंडिकेट इन एक्सेल में जाके हम लोग कितने कॉलम्स ये करने हैं,
तो ये देखो, ये इतना सिलेक्ट करेंगे तो इतने इतने ही कॉलम्स में फॉर्मेटिंग करेगा। सेट फॉर्मेट, डेटा टाइप जनरल, पर टाइप, ये सब उसने जनरली रखा है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमें चाहिए सेंटर में, बॉटम भी नहीं, सेंटर में, और रैप करना है टेक्स्ट को। फॉन्ट में हम रखेंगे कैलिबरी, कैलिबरी ठीक है। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, अंडरलाइन स्टाइल नहीं चाहिए, और 14 रखेंगे। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ब्लैक ही रखेंगे। और फिल में जाके जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो हम करेंगे, कौन सा कलर अच्छा है, डार्क खाकी, खाकी कलर रखेंगे। तो ये है, तो ये हमने फॉर्मेट सेल वाला रख दिया। कौन कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? We'll read the data from each coffee shop report and append it to the output file, in the column names, and formatted the header cells. As a ओके, next एज ए step, नेक्स्ट स्टेप। we'll read the data from each coffee shop report and append it to the output file. Let's add a For Each File in Folder activity to go through each file in our input folder and perform certain actions. Hence, we need to specify our input folder path. तो अभी जो हमारे पास 5 एक्सेल फाइल्स है, वो हर एक एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए उसने फॉर ईच एक्सेल फाइल इन फोल्डर, फॉर ईच फाइल इन फोल्डर वाली एक्टिविटी यूज की है, और वो फाइल को लोकेट Next, किया है। let's add a Use Excel file activity to use each of the input files and perform specific actions within each file. Let's specify the Excel. ओके, तो फॉर ईच फाइल इन फोल्डर एक्टिविटी जो है वो हम करेंगे। ये ओपन क्यों रहेगी? ओके, सो इसके बाद फॉर ईच फाइल इन फोल्डर, फॉर ईच फाइल इन फोल्डर, ये वाली एक्टिविटी है। उसमें उसने करंट फाइल ही रखा है और पाथ दिया है एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन, इसमें डेली सिलेक्ट फोल्डर। ओके, इंक्लूड सब फोल्डर्स की फोल्डर्स वेयर एक्सेस इज डिनाइड, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उसने यूज एक्सेल फाइल एक्टिविटी किया है ना, यूज एक्सेल, यूज एक्सेल फाइल। ओके, आगे क्या कर रहा है भैया वो? file name, which we want to open as currentfile.fullname, as we want to open all the files. ओके, सो करंट फाइल जो है, ये एक्टिविटी जो है, इसमें हमने फॉर ईच के लिए करंट फाइल रखा है। ओके, सो इधर भी हम करंट फाइल डॉट फुल नेम वो ओपन करेंगे। मतलब जो करंट फाइल रहेगी और जिसका पूरा नाम रहेगा वो ओपन होगी One by one. We'll also रेफरेंस। reference the files as source Excel as they contain our input data. ओके, सो उस फाइलों में, ये जो डेली रिपोर्ट वाली जो फाइल है, इन फाइलों में अपना डेटा है, इसके लिए हमें इसको सोर्स फाइल बोलेंगे हम लोग। और इसलिए उनको रेफरेंस करने के लिए इधर डालेंगे सोर्स एक्सेल। Next, we must read the data from these files and append the data to the output file. To do this, let's add an append range activity. सो कितने, In the Excel range to append field, we'll specify the Excel range that we want to append. In this case, we have two options. We can select which Excel file to open and which part of the sheet to use. Or we can use the whole sheet. Let's go with the second option. In the Append After range, we'll choose our output file sales results. And in the What to Copy field, we'll choose values disregarding the formulas and formats. It's a good idea to exclude headers so that they don't repeat in the results. Perfect. Let's run the process. ओके,
सो उन्होंने क्या किया उसके बाद, यूज एक्सेल के बाद में उन्होंने अपेंड रेंज एक्टिविटी यूज की है। अपेंड रेंज ही है ना, अपेंड रेंज। सो अपेंड मतलब वो सोर्स फाइल से डेटा कलेक्ट करके अपने डेस्टिनेशन फाइल में डालेगा। डेस्टिनेशन फाइल मतलब वो जो सेल्स रिजल्ट्स की फाइल है उसमें वो डेटा पूरा पेस्ट करेगा। तो अपेंड रेंज एक्टिविटी ये वाली है। अपेंड रेंज एक्टिविटी में एक्सेल रेंज टू अपेंड source excel, indicate in excel, you need to indicate template file this offers। ओके अपने पास तो है, तो उसको बस यस कर देना है। डेली रिपोर्ट्स, कॉपी शॉप, और ये पूरा रेंज, मतलब पूरा डेटा कॉपी करना है ना। अगर हमें सिर्फ इतना कॉपी करना है तो हम बस इतना ही सिलेक्ट करेंगे, बट हमें चाहिए पूरा डेटा। हमने ये हेडर सब डाले हैं बराबर, तो हमें ये पूरा डेटा लगेगा और इसको करेंगे कंफर्म। और अपेंड रेंज एक्सप्रेशन, अपेंड आफ्टर रेंज सेल्स रिजल्ट में उसने क्या किया, इधर सेल्स रिजल्ट में Whole sheet. Let's go with the second option. In the append after range, we'll choose our output file sales results. ओके वो कहाँ पे पेस्ट करना है ना, तो वो हमें पेस्ट करना है सेल्स रिजल्ट में। से सोर्स एक्सेल से मतलब डेली रिपोर्ट से उठाया और सेल्स रिजल्ट में शीट 1 में पेस्ट किया। तो वहाँ पे इंडिकेट इन एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सक्लूड हेडर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि इधर हमने ऑलरेडी हेडर्स सब बनाए हैं, तो वो हेडर्स कॉपी नहीं करेगा। ओके, And in the what to copy field, we'll choose values तो कॉपी क्या करना है हमें, ऑल नहीं, जो वैल्यूज है वो बस वैल्यूज कॉपी करनी है। तो बस वैल्यू ही कॉपी करेगा वो। अगर कुछ अल्फाबेटिकल कुछ रहेगा तो वो कॉपी नहीं करेगा। ओके, disregarding the formulas and formats. It's a good idea to exclude headers so that they don't repeat in the results. Perfect. Let's run the process. We can see that our process is reading data from the input file and appending it to the output file. Great! To not duplicate data from one execution to the other, it's better to delete the output file before running the process. For this, we'll add a delete file activity at the beginning. तो उसने रन किया है ना, तो हम भी रन करेंगे ना एक बार। सेव करना है, हर बार सेव करना भूल जाते हैं। ये रन, तो अभी वो रन हो रहा है। ओके, तो इधर हमने ये ना थोड़ा सा गड़बड़ उसने कर दिया है लगता है। तो ये सेल्स रिजल्ट में आएगी, तो उसने देखो ये ऐसा तो कर दिया, फिर कॉपी क्यों नहीं हुआ डेटा। तो सेट फॉर्मेट में जो अलाइनमेंट थी, रैप टेस्ट को कैंसिल कर देंगे, वापस से रन करेंगे। बट वापस से रन करने के लिए वो फाइल ये हो जाएगी ना, तो इसलिए उसने डिलीट फाइल एक्टिविटी यूज किया है। Beginning of our process. डिलीट सेल्स से मतलब जो We'll एग्जिस्टिंग जो specify है the location वो and the name डिलीट of the कर देगी, file सेम as we नाम वाली did when फाइल। creating it. जो फाइल का फंक्शन हमने यूज किया था वो पूरा का पूरा उसमें डाल देगा। डिलीट फाइल एक्टिविटी, उसने पूरा टॉप में डाला है। और ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन हम इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये वाली फाइल जो है सेल्स रिजल्ट वाली, वो डिलीट कर देगा सबसे पहले। तो अब भी रन करके देखते हैं। ओके, And annotate this activity. डेवलपमेंट पर्पस में एनोटेशन भी लगा के रखा है।
Create sales result. Spelling. Development purpose. Okay. To fit data within a cell and make it look right in the output file, we'll add an auto-fit range activity. We'll place it below the append range. We can easily specify the sheet that we want to arrange. We've now completed the first part of our objective. ऑटो फिट एक्टिविटी भी उसने सबसे लास्ट में ऐड करके रखी है। तो ये फॉर ईच के नीचे डालना है हमें, तो इसलिए हमने उसको मिनिमाइज कर दिया। यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये एरो को ऊपर से। ऑटो फिट, ऑटो फिट रेंज एक्टिविटी, तो वहाँ पे हमें बस वो इंडिकेट करना है शीट 1। ओके, कंट्रोल एस। Next, we'll create a pivot table. ये देखो, We'll place it below the append range. We can easily specify the sheet that we want to arrange. We've now completed the first part of our objective. Next, we'll create a pivot table and a chart to analyze and display the consolidated data. Let's add a Create Pivot Table activity. Set the source for the table we are going to create. Let's do this by indicating the range of data from our output file. Then we'll provide a name for the pivot table and the destination where we want to save the table. In our example, we'll choose our output file as the destination, but create a new sheet within it. Select A1 cell and click Confirm. To add fields to our pivot table, click Add Pivot Table field. Next, enter the column name we want to analyze. We'll choose Item, which is a row. Next, we'll choose Total Income, which is a value that stores the sum of incomes from all 5 shops for each item. Great! The last step is to create a chart. create table or create chart. For this, let's add an Insert Chart activity and specify the values. For the chart category, let's select Pi as chart type. In the Data Range field, which is asking for the input range for the chart, we'll indicate Sheet 2 from our output file. Next, we'll indicate the sheet where we want to insert the chart. In our case, we'll again choose Sheet 2 from the output file. The last field, Save the Chart, allows us to use the chart in other activities of the process. We don't need this option. Perfect. Let's run the process again. It's working as expected. चार्ट के ये क्या क्या किया? We'll indicate the sheet where we want to. In the Data Range fields from all 5 shops, use Total Income, which is a value that stores the. For this, let's add an Insert Chart Insert activity chart. and specify the values. For the chart category, let's select Pi as chart type. In the Data Range field, which is asking for the input range for the chart, we'll indicate Sheet 2 from our output file. Next, we'll indicate the sheet where we want to insert the chart. In our case, we'll again choose Sheet 2 from the output file. The last field, Save the Chart, allows us to use the chart in other activities of the process. We don't need this option. Perfect. Let's run the process again. ओके, तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो उसने In the क्रिएट पिवट टेबल एक्टिविटी से करना है ना हमें।
cells main sequence, create pivot table. At pivot table, Excel range cells result sheet 1, और वो उसमें इंडिकेट भी कर सकते थे, उसने इंडिकेट करके किया था ना, तो इंडिकेट करेंगे। इसमें आइटम्स का कुछ आया नहीं है, क्यों नहीं आया है? एक बार रन करके देखते हैं वापस। ओके, इधर देखो, इधर है ना, ये आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है अपना कोड में। क्या गड़बड़ हो सकता है? डिलीट वाला तो ओके है, सेल्स रिजल्ट एट टाइम नाउ, ये फाइल तो क्रिएट हो रही है, राइट भी हो रहा है, फॉर्मेट भी हो रहा है। तो ये जो फॉर ईच वाला जो है, इधर कुछ तो भी गड़बड़ है। करंट फाइल डॉट फुल नेम वाला जो है ना, उसमें उसने क्या किया है? File and folder activity to go through each file in our input folder and perform certain actions. Hence, we need to specify our input folder path. कि उसने डू में कुछ तो भी डाला है इसके। इधर करंट फाइल तो है अपना, सिलेक्ट फोल्डर, ये भी हो गया। चलो ठीक है, उसने डबल क्लिक करके किया था, डबल क्लिक, डेली रिपोर्ट्स, ओके। Next, let's add a use Excel file activity to use each of the input files and perform specific actions within each file. Let's specify the Excel file name, which we want to open as currentfile.fullname, as we want to open all the files one by one. We'll also reference the files as source Excel as they contain our input data. Next, we must फाइल डॉट फुल नेम वाला तो है, देखो करंट फाइल डॉट फुल नेम है, और इसको सोर्स एक्सेल भी बोला है। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, वो दोनों चेक बॉक्स भी है। read the data from these files and append the data to the output file. To do ओके, this, let's इसने add an टेम्पलेट फाइल append पे range क्लिक नहीं किया था, तो अपना क्या इधर आ गया, टेम्पलेट फाइल पे चेक नहीं करना है, यहाँ पे चेक है। ओके, तो एक बार वापस रन करके देखेंगे। तो अपेंड में ही कुछ तो भी गड़बड़ है। activity. In the Excel range to append field, we'll specify the Excel range that we want to append. In this case, we have two options. We can select which Excel file to open and which part of the sheet to use. Or we can use the whole sheet. Let's go with the second option. इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है क्या? अपेंड रेंज, सोर्स एक्सेल, इंटीग्रेट इन एक्सेल, ओके। डेली रिपोर्ट्स, कॉफी शॉप 1,
अरे ये गड़बड़ हो गई क्या भाई साहब? तो वो उसी में कॉपी हो गया है सोर्स एक्सेल में, इधर वो जो था टेम्पलेट फाइल उसके लिए। अपना टेम्पलेट फाइल जो है वो इधर ऊपर है, सेल्स रिजल्ट। तो इधर टेम्पलेट फाइल चेक बॉक्स किया इसलिए वो उसी में कॉपी हो गया, तो उधर से पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो ये देखो ये इधर ही कॉपी हो गया, तो एस्प्रेसो से चालू होता है ना, A11। इधर डिलीट, इसको करेंगे सेव, करेंगे क्लोज, इसको सोर्स एक्सेल, इंडिकेट इन एक्सेल, कॉपी शॉप 1। हाँ, तो ये पूरा डेटा हमने किया प्लस ये इसको सेल्स रिजल्ट में शीट 1। ये क्यों हो रहा है? ओके, बार इसको रन करते हैं। रन टाइम एग्जीक्यूशन एरर। In the Append After range, we'll choose our output file sales results. And in the What to Copy field, करके okay, message failed opening excel file, excel consolidation report, copy shop 1, possible reason file is corrupt, file already used by another process। okay, तो अपने पास ये फाइल ऑलरेडी ओपन है इसलिए वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो हमने क्लोज किया। अब इससे रन करेंगे। ओके, ये देखो अभी डाल रहा है, ऑटो फिट भी कर दिया उसने। ओके, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन एंडेड। सो ऑटो फिट रेंज के बाद उसने डाली थे क्रिएट पिवोट टेबल, क्रिएट पिवोट टेबल एक्टिविटी, सोर्स सेल्स रिजल्ट, शीट 1 की जगह हम इंडिकेट इन एक्सेल करेंगे। ये देखो ये आ गया है तो ये पूरा हम उठाएंगे, इसको करेंगे कंफर्म। हो गया ना भाई? नहीं हुआ? इंडिकेट इन एक्सेल, हाँ। we'll choose Values disregarding the formulas and formats. It's a good idea to exclude headers so that they don't repeat in the results. Perfect. Let's run the process. We can see that our process is reading data from the input file and appending it to the output file. Great! To not duplicate data from one execution to the other, it's better to delete the output file before running the process. For this, we'll add a delete file activity at the beginning of our process.
We'll specify the location and the name of the file as we did when creating it. And annotate this activity. To fit data within a cell and make it look right in the output file, we'll add an AutoFit range activity. We'll place it below the append range. We can easily specify the sheet that we want to arrange. We've now completed the first part of our objective. Next, we'll create a pivot table and a chart to analyze and display the consolidated data. Let's add a Create Pivot Table activity. ये इंडिकेट नहीं हो रहा है. गड़बड़ है कुछ तो भी. Set the source for the table we are going to create. Let's do this by indicating the range of data from our output file. And then we'll provide a name for the pivot table and the destination where we want to save the table. In our example, we'll choose our output file as the destination, but create a new sheet within it. Select A1 cell and click Confirm. To add fields to our pivot table, click Add Pivot Table. इधर ये इंडिकेट नहीं हो रहा है.
बरोबर आहे. इधर पैकेजेस में जाके सिलेक्ट कहाँ नहीं होते. Auto fit range and create sales pivot table. करके देखेंगे. ओके, ये फाइल हो गई. अभी क्रिएट पिवट टेबल. हाँ, अब भी हुआ. ओके, वो तो रन अच्छे से नहीं हुआ था, हमने बाद में चेंजेस किए थे ना. ओके, तो उसने उसके आगे क्या दिया है? Field. सेल्स बाय स्टोर. सेल्स बाय स्टोर. और डेस्टिनेशन में शिप Next, टू सिलेक्ट किया है ना. सेल्स रिजल्ट इंडिकेट इन एक्सेल. ये शीट 2 A1 कंफर्म.
कुछ तो गड़बड़ है यार। एरर, वैलिडेशन एरर। तो इसको हमें ना डिसेबल भी कर सकते हैं। एक्टिविटी को अभी डिसेबल कर दिया, अभी रन करते हैं। इसको अनेबल करेंगे और फिर यहाँ पे सेल्स रिजल्ट इंडिकेट इन एक्सेल शीट नंबर 2 A1 नहीं हो रहा है यार। Shift to A1 Excel validated require at least one child activity to be present. Add pivot table. Enter the column name we want to analyze. We'll choose Item, which is a row. Item, which is a row, and unit price, which is value, okay. Next, we'll choose Total Income, which is and total income तो दोनों चीज को लगते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। Okay. a value that stores the sum of incomes from all 5 shops for each item. Great! The last step is to create a chart. For this, let's add an Insert Chart activity and specify the values. Insert chart. Pie chart करना है। Data range. For the chart category, let's select Pie as chart type. In the data range field, which is asking for the input range for the chart, we'll indicate Sheet 2. कौन से शीट में से लेना है? शीट 2 में से लेना है। इंसर्ट इनटू शीट, शीट 2 में ही पाई चार्ट ये करना है और सेव From our चार्ट 2 output करने की file. जरूरत नहीं है। Next, we'll indicate the sheet where we want to insert the chart. In our case, we'll again choose Sheet 2 from the output file. The last field, Save the Chart, allows us to use the chart in other activities of the process. We don't need this option. Perfect. Let's run the process again. ये हम करेंगे सेव और इसको करेंगे रन।
ये फाइल ओपन है ना, इसलिए वो लफड़ा हो रहा है। के रन होने के बाद ये हमें फाइल दिखेगी सेल्स रिजल्ट में। ये देखो, पाई चार्ट वगैरह ऑटोमेटिकली बन गया है और ये शीट 1 में पूरा डेटा भी कलेक्ट हो गया है। के ये तो डन हो गया। नेक्स्ट। It's working as expected. Let's look at the output file and verify. Our process has created a pivot table and inserted a pie chart. And in Sheet 1, we can also see the consolidated records. If we look closer at the number of records, we see a total of 40. This means that our process missed one of the 5 Excel files and therefore the data for it is missing. Do you know why this happened? Let's see how we can debug and fix this issue in the next video. तो इसमें लफड़ा हुआ है। ये जो डेटा कलेक्ट किया है 40 ही है, बट अपने पास ये जो है रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट्स, ये है 5। मतलब इन टोटल अपने पास 50 रिकॉर्ड्स चाहिए, बट वो है 40 ओनली। ये 41 मतलब ये पहला कॉलम छोड़ के 40 है। ये देखो, काउंट इज 40। ओके, तो ये मतलब उसने एक कोई तो भी एक्सेल शीट है जिसमें से डेटा उठाया नहीं है, तो वो कैसे रेक्टिफाई करे। तो एक एक शीट देखने की बजाय वो अभी क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। Great! This concludes our demo. As a quick recap, in this video we saw how to use different activities to extract data from multiple Excel files and merge them into one. We also created a pivot table and a chart to analyze and represent the consolidated data. Can you recall the activities used to build the process? Thank you for watching, and until next time, happy automation! कि अभी किसी ने कुछ पूछा है क्या, नहीं पूछा है? तो अकेला ही तो है। कोई नहीं आने वाला। गेम की स्ट्रीम सबको देखनी है, सीखने वाली नहीं देखनी है। ये तो चलो, अभी नेक्स्ट वाला ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट, इसमें कुछ था क्या? अरे नॉलेज चेक है। What are the automation best practices to consider when automating a project? Workflow files, activities, arguments, and variables should have meaningful names to accurately describe the usage throughout the project. Best practices क्या क्या है जब भी हम कोई प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं? तो then choosing the appropriate layout, type of process, we are building sequence, flowchart or state machines, ये भी है। Using version control system to easily manage project for versioning and sharing the work of more developers. Making sure that the output files are deleted at the beginning of process before running. Using upper camel case for naming. Okay, सभी तो बेस्ट प्रैक्टिसेस लग रही है। ये नहीं है, सब थोड़े ना डिलीट करेंगे। कुछ आउटपुट फाइल अगर काम करेगी तो वो थोड़ी ना डिलीट करेंगे, बराबर है। ओके, करेक्ट। तो अभी देखते हैं इसमें क्या। एक मिनट में आया।
Building the process part 2. What you will learn in this video: identify what caused our workflow to not work as expected. Use if activity to decide what action is required in the next workflow. When building an automation, you will likely to run into different errors, exceptions, and coding challenges. Being able to thoroughly understand how all the activities methods work together will enable you to quickly identify the root cause of an issue. As you build more, you will find that identifying and fixing issues is nothing to fear when using Studio. Now that we have a working workflow, let's use the Studio's debugging capabilities along with the right control flow activity. ओके, तो अभी जो हमने डिस्कस किया है कि 5 फाइल से बट 40 रिकॉर्ड आए, 50 आने चाहिए थे, तो वो उसमें क्या करेगा? Hello, and welcome to this video, where we'll identify what caused our process to not work as expected and find a solution. All set? Great! Let's get started. Our process extracts data from multiple Excel files and consolidates it into one. In reviewing the output file, we observed that the data from one of the files hadn't been extracted by our process. Let's look at the output file to learn more about this. We have 5 Excel files with 10 records each. We should have 50 records, but we only have 40. Let's fix this. We start by adding a breakpoint at the For Each File and Folder activity, as this will enable us to step into and execute each activity manually. We now right-click the activity and select Toggle Breakpoint. ओके, फॉर ईच एक्सेल रिपोर्ट में उसने ब्रेक पॉइंट ऐड किया है. यूज एक्सेल सीक्वेंस ये थी. हाँ, तो यहाँ पे एक एक फाइल वो देखने वाला है ना, तो उधर उसने टॉगल ब्रेक पॉइंट ऐड किया है, तो हमने भी कर दिया है. And run the process in debug mode by selecting Debug File from the Debug tab. As we can see, the execution starts and stops when it reaches the breakpoint. At this point, we can use Step Into for each activity. Once we reach the end of the sequence, it means that we've finished processing our first input file and appending the data. We verify the records in the output file. We can see that it contains 10 records equal to the first input file. Great! Let's close the file and continue our manual execution to process the second input file. We click Step Into again and open the output file to verify the results. We can see that the results file still has ओके, तो उसने डिबग में जाके डिबग किया. तो टॉगल ब्रेक पॉइंट मतलब यहाँ पे आके वो प्रोसेस रुकेगी, जो अभी रुक गई है. ओके, तो हमें करना है स्टेप इन टू. डू डू डू. ओके, तो हमें बस वो एक बार ये देखो, सेल्स रिजल्ट में ये 10 आ गई है. ओके, हमें वापस एक बार स्टेप इनटू करना पड़ेगा. वो दूसरी फाइल को जब चूज करेगा, failed setting the current sheet 1 in the workbook, reports consolidation sales result, the object info has disconnected from its client. ओके, हमने वो शीट ये किया ना, इसीलिए स्टॉप करो इसको. वापस से प्ले करो. ओके, स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू. ओके, ये था पहला, तो ये हो गया. नेक्स्ट दूसरा. हाँ, ये देखो, ये इधर
पेस्टिंग तो दिखा रहा है बट पेस्ट कुछ नहीं किया है, तो सेकंड शीट में प्रॉब्लम है अपने। only 10 records, indicating to us that the second input Excel file was not processed. Let's open the second input file and try to understand why. We notice here that the sheet name is शीट में गड़बड़ी है। शीट नंबर 2, शीट 1 है बट इधर कुछ नहीं है। और इधर न्यू शीट भी लिखा है। ओके, शीट 1 कहाँ से आ गया भाई? नहीं, अभी के लिए उसको हम ये कर देंगे। रुको 1 मिनट, ये आगे वाला कुछ तो भी है अपने पास आ गया है, डिलीट। ओके, इसको करेंगे सेव यहाँ पे। new sheet, but in the append range activity, we selected the sheet as sheet 1. Thus, the sheet name did not match and caused our process to ignore the file. Fortunately, there is an easy way to correct this. Let's stop debugging for now. Next, we want to check the name of the sheet before appending the data, and if the name does not match the correct one, we want to rename the respective sheet to sheet 1. To do this, let's add an if activity before the append range and rename it. कि append range के पहले इसको स्टॉप कर दो। बताता हूँ, इधर गया append range। append range के पहले if एक्टिविटी ऐड करनी है हमें। if the sheet is not name of if activity, The if activity contains two blocks, namely if sheet has a different name, sheet has not the same name, if she different name, कंडीशन डालनी है उधर ना, तो कंडीशन क्या then डालता है? and else. If the condition provided in the if statement is true, our process will execute the then block, and if the statement is false, our process will execute the else block. As condition, let's indicate the current Excel file referenced as source Excel and use the selected sheet property .name to access the sheet. Then use is not operator to verify for the correct name, being sheet 1. source excel dot selected sheet dot name is not, इधर source excel dot इधर कंडीशन बिल्डर भी है। greater than, less than, equal to, not equal to, is not equal to, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। source excel sheet 1 is not, ये बहुत डेंजर है, ऐसे ही करते हैं। source excel dot selected sheet name is not
की जरूरत नहीं है. Is not sheet 1. Now let's add a rename sheet activity in the then block. Save. Then में rename sheet activity आएगी. In the From field, we'll choose the sheet that we want to rename. In the From field, we'll choose the sheet that we want to rename using the expression sourceexcel.selectedSheet. In the Source Excel dot selected To sheet. field, we can type in the new name as Sheet 1. Okay. तो इधर इफ एक्टिविटी हमने ऐड की, तो इफ एक्टिविटी में कंडीशन डाली कि सोर्स एक्सेल जो है अपनी, ये रेफरेंस कर रहे हैं हम सोर्स एक्सेल को, डॉट सिलेक्टेड शीट, जो शीट उसने करंटली सिलेक्ट की होगी उसका नाम अगर शीट 1 नहीं होगा तो उसको सिलेक्टेड शीट के नाम से हटा के शीट 1 करना है. ओके. एल्स में कुछ डालने की जरूरत नहीं लग रही मुझे. Let's add a log message here to let us know when a renaming was performed. और जब भी वो ये परफॉर्म करेगा तो उधर हमें डालना है लॉग मैसेज. मतलब हमें पता चलेगा कि कौन से शीट पे उसने नाम बदला है. मैसेज क्या रहेगा, उसने क्या डाला है मैसेज, फाइल कंटेनिंग शीट विद अनएक्सपेक्टेड नेम शीट हैज बीन रीनेम्ड. शीट हैज बीन रीनेम्ड. लॉग लेवल है अपनी इन्फो. ओके. As a best practice, let's also add a log message activity inside the else block. शीट हैज एक्सपेक्टेड नेम. अगर नहीं होगा तो भी हमें लॉग मैसेज दे देगा वो, जिसमें वो बोलेगा कि शीट हैज द एक्सपेक्टेड नेम. लॉग लेवल है अपनी इन्फो. ओके. Perfect. Now let's run our process again and see if it consolidates all data. क्या है रन, तो हम भी करेंगे रन. पहले करेंगे सेव, रन. ये तो हो रहा है. वाह, इसने तो कर दिया विदाउट एरर. तो आउटपुट में हमें दिखेगा शीट हैज बीन रीनेम्ड, शीट हैज बीन रीनेम्ड, शीट हैज बीन रीनेम्ड.
Excel report consultation when execution started, it has been renamed. ये वाला log message क्यों नहीं जा रहा है? Okay. The execution finished. We'll open the output. ये तो देखना भूल ही गए ना. हाँ ये देखो 50 आ गए अभी. चलो मतलब अच्छा हुआ ना कि File and verify the results. We see the pivot table and the chart in Sheet 2, and if we go to Sheet 1, we now have 50 data records, meaning that our process extracted and consolidated data from all 5 input files. We can also check if our process renamed the sheet, and we can see that it is now named Sheet 1. अच्छा वो भी renamed हो गया क्या? Yeah, it is now renamed as Sheet 1. Okay. Great! अच्छी बात है. This concludes our process of building an automation project with UiPath Studio. As a quick recap, in this video, we've walked through the steps of identifying and correcting the way our input files were processed with the help of breakpoints. Can you recall where in the process we've added the breakpoint and why? Also, what activity did we use to catch name exceptions, and how did we handle them? Thank you for watching, and until next time, happy automation! Okay. उसकी ये जिप फाइल है सॉल्यूशन की. तो लेसन समरी में हमने क्या पढ़ा? ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर प्रॉपर कंट्रोल फ्लो इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डीबगिंग एक्शन इन स्टूडियो. यू कैन नैरो डाउन द पिन पॉइंट्स. You can narrow down and pinpoint issues in a workflow, implement the appropriate control flow activities. To trace the evolution of running process, log message activities are used to supervise, diagnose and debug the process. ओके बट इधर है ना थोड़ी सी गड़बड़ है. तो गड़बड़ ये है कि ये वाला नहीं आ रहा है ना. debug में पता चलता है सब कुछ. ब्रेक पॉइंट हम लोग निकाल देंगे. ओके तो ये अपना कंप्लीट हो गया है. तो इधर ये सब रिसोर्सेज है, डॉक्यूमेंट्स है. चेक नॉलेज. How can we purposely pause the debugging process on an activity which may trigger execution? तो toggle breakpoint डालते हैं ना, इसलिए वो purposely pause होती है. Yes, correct. Publishing and running the process. तो इसको हमें पब्लिश करना है, तो वो छोटा सा है, तो एक बार देख लेते हैं और पब्लिश करते हैं. Hello, and welcome back. Now that we have seen how we build and debug our code, let's publish it to Orchestrator
and run it with Assistant. By the end of this video, we'll be able to list and explain the publishing options for a process in Studio, publish a process to the Orchestrator tenant process feed, identify the published package in Orchestrator and add a new process, run a process with UiPath Assistant. Let's pick up from where we left off. Thus, make sure to open the Studio project and follow along. All set? Great. Let's get started. To publish a project, we select Publish in the Studio Design tab ribbon. Upon clicking Publish, the Workflow Analyzer checks all enabled rules regardless of their action, and publishing is allowed only if there are no rule violations with the action error. Next, we can see some publishing properties that we can configure. Let's explore the Package Properties tab. We can give the package a name. Currently, our package name is displayed. In the Version section, we can review the current version of the project and the new version that is going to be created. By checking the Pre-Release box, the package can be marked as pre-release if it is not the final version of the code. We have the option of setting the package icon and defining some tags. These tags are useful for easily finding the process later if we have a large number of processes published. In the Publish Options tab, we select where to publish the project. The available options depend on the type of project we are publishing. Orchestrator Tenant Processes feed, Orchestrator Personal Workspace feed, and if a first-level folder with a separate package feed or one of its subfolders is selected from its folders menu in the Studio status bar, the feed for that folder hierarchy. These options are available if Studio is connected to Orchestrator. The Orchestrator Personal Workspace feed is available only if your user has the Personal Workspace feature enabled in Orchestrator. For this demo, we'll publish the Orchestrator Tenant Processes feed. However, you can also publish your process to your Personal Workspace feed, or you can publish to your machine using the Custom option. We can also sign the certificate for our package here. Currently, we'll not be taking this action. Perfect. Let's click Publish. Studio is now creating the package and publishing it to Orchestrator. The info message box lets us know that the process was successfully published. Let's now open our browser and access cloud.uipath.com and go to Orchestrator. On the left-hand side, click Orchestrator. Let's check if the newly published package is showing up. For that, we click Tenant, then Packages. Our package name can be seen here in the Packages list. Good. Now, to create a process, we need to navigate to the folder where the process will be created. In our case, the Shared folder. Click Processes, then Add Process. We can see here 3 steps. On the Process Configuration step, the first drop-down list allows us to select the package we want to use. In our case, Excel Reports Consolidation. The entry point for our package is shown here. If we have several entry points in the down list of processes will be created. In our case, our package name can be seen here in the Packages list. में है वो ध्यान Good. रखो। Now, to create a process, we need तो यहाँ से करते हैं स्टूडियो ओके डिजाइन, इसको सेव किया और इसको पब्लिश करना है। वर्जन अभी मेरा पर्सनल वर्कस्पेस पे है वर्जन, तो इधर हम 5 डालेंगे। नेक्स्ट पर्सनल वर्कस्पेस फीड, नेक्स्ट पब्लिश। पब्लिश्ड सक्सेसफुली। अभी हम जाएंगे ये वाले अकाउंट पे जहाँ पे cloud.uipath आ गया है। टेनेंट में, पैकेजेस में, एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन,
अरे लोड पैकेजेस, तो नहीं आ रहा है। The info message box lets us know that the process was successfully published. Let's now open our browser and access cloud.uipath.com and go to Orchestrator. On the left-hand side, click Orchestrator. Let's check if the newly published package is showing up. For that, we click Tenant, then Packages. Our package name can be seen here in the Packages list. Good. Now, to create a process, we need to हम जो नया पब्लिश करते हैं तो दिखेगा वो कंसोलिडेशन डॉट न्यू, फेब्रुवरी में हो रहा है तो न्यू फेब, ओके 1, ओके कैंसिल, ये इधर गड़बड़ हो गई ना। फेब नेक्स्ट, ऑर्केस्ट्रेटर पर्सनल वर्कस्पेस स्पीड, नेक्स्ट पब्लिश। तो हमारा वर्जन है 1.0.6, ओके ओके। तो यहाँ पे रिफ्रेश अगर हम करेंगे हाँ, ये देखो ये है इधर। तो उन्होंने क्या किया है, navigate to the folder where the process will be created. In our case, the shared folder. Click Processes, then Add Process. न्यू फेब, We can see here 3 steps. On the process configuration step, the first drop-down list allows us to select the package we want to use. In our case, Excel reports consolidation. The entry point for our package is shown here. If we have several entry points in our code, we can choose the default entry point. We can also check the version. Let's click Next. For this step, we can see the requirements that our package has. We can have a queue as package requirement, for example. On the Additional Settings step, we can enter some additional process details by adding a display name for our package. We can change the job priority for this process and supply a brief description. We may also add tags and labels. Let's click Create. सर मैं डालता हूँ न्यू एक्सेल कंसोलिडेशन, टैग्स वगैरह कुछ डालने नहीं है, ओके क्रिएट। Great! We have added our process to the designated folder. We can click Close. The newly created process is visible on the first row. Perfect! Now it's time to run it with UiPath Assistant. To open Assistant, we just need to type UiPath Assistant in the Windows taskbar and once identified, click the app. Once opened, we must select the process and click Run. As we can see, the job started processing.
We can also pause, stop, or resume at any time. As we speak, the process is executing in the background. The execution is now complete. If we look at our project folder in the Sales Result folder, we can find our sales results file. Great! With this, we conclude our demo on publishing a process to Orchestrator and running it through UiPath Assistant. Here's a quick recap. To publish a अभी ये तो क्रिएट हो गई है ना, इसको क्लोज करेंगे। शेड में कुछ दिख रहा है क्या न्यू वाला? एक्सेल रिपोर्ट्स कंसोलिडेशन, ये वाला देखो, ये वाला प्रोसेस है। तो अभी इसको हम करेंगे यूआईपाथ से, इसको करेंगे कट, वापस से एक बार ओपन करेंगे यूआईपाथ। न्यू एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन, इसको करेंगे इंस्टॉल। इधर भी इंस्टॉल, यहाँ से भी रन कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटर से, पर अभी हमारे पास वो लाइसेंसिंग नहीं है, इसलिए वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये देखो, requires an unattended robot to define your user ID। अपने पास वो नहीं है unattended robot। तो अभी ये जो न्यू एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन है, जो नेवर रैन जो अभी दिख रहा है, तो इसको हम प्ले करेंगे, तो वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है। अरे, तो बैकग्राउंड में होना चाहिए था। चलो ठीक है, बट रन तो हो रहा है। ओके, तो ऑर्केस्ट्रेटर पे पब्लिश हो गया है। हाँ, वो ये थोड़ा सा दिक्कत है, वो अभी हल्लू हल्लू पता चलेगा हमें किधर अटक रहे हैं हम। ओके, बट अभी ये इधर मेरा थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटर में गड़बड़ है, वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या है। तो इस यूआई पे मैं रोज काम करता हूँ कंपनी में। ऐड प्रोसेस अगर हम करते हैं, न्यू वाला प्रोसेस नहीं दिख रहा है। ये देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ मैं क्या है। इधर देखो, ये इतने वर्जन्स मैंने किए थे, 10 months अगो, 6 days अगो, 10 months अगो, तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव जाते हैं, झक मार के करना ही पड़ेगा लोगों के सामने ना। project, select Publish from the Studio बराबर है कि Design नहीं? tab ribbon. We can choose the Publish करते option हैं for फिर। our project. From Orchestrator, we can add and run a new process using a published package. With UiPath Assistant, we can easily access, manage, and run processes with just a couple of clicks. Thank you for watching, and until next time, happy automation! सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटर पे पब्लिश करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं इसे वापस पब्लिश करूँ, एक्सेल रिपोर्ट कंसोलिडेशन, वेब का नाम देके,
नेक्स्ट करता हूँ पर्सनल वर्क स्पेस फील्ड में कस्टम प्रोसेस फील्ड में करते हैं। टेनेंट में करके देखते हैं एक बार। ओके 1.0.7 ये गया टेनेंट में। पैकेजेस, हाँ ये देखो ये इधर आ गया वाला। ऐड प्रोसेस, ये देखो ये टेनेंट में है इसलिए हमें ये दिख रहा है। ओके अब भी होगा। पैकेज रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम, एक्सेल, कंसोलिडेशन, वेब। ओके तो ये हो गया। वो किधर गया असिस्टेंट अपना? अरे इतना क्या ओपन हो गया है? तो अब ये होता है क्या, देखते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा इसको। हाँ वो रोबोट ने किया है ना, इससे हो रहा है शायद वो। देखते हैं, पूछता हूँ मैं और फिर करता हूँ। ओके देन, तो अभी के लिए तो आज के लिए इतना ही है। तो ये जो नॉलेज चेक है, लेसन समरी, if the option to enforce analyzer before publish is enabled in Studio, workflow analyzer checks all the enabled rules regardless of their action, and publishing is allowed only if there are no rule violations with action error. We can publish automation projects to orchestrator with NuGet feed or locally. If publishing to orchestrator, the archive project is displayed on the packages page, and we can create a process to be distributed to robots. To run the process with assistant, we must first create the process in orchestrator. orchestrator में पहले प्रोसेस बनाना पड़ेगा असिस्टेंट में रन करने के लिए। अभी इसका भी नॉलेज चाहिए यार। हाउ कैन वी पब्लिश द orchestrator personal workspace field? By first enabling option to the orchestrator, then selecting orchestrator personal workspace field when publishing in Studio. By making sure the user has the automation developer named user. By selecting assistant robot. By connecting to orchestrator. ये पहला वाला ही है। अभी बुद्धू नहीं हूँ मैं। अभी इधर 6 क्वेश्चन है, फटाफट ले लेते हैं। Bernard, see the snow? Yeah, I haven't turned my camera. कितनी देर है रे? अर्धा तास। ओके मुझे एक काम है, तो एक क्विज हम कल स्टार्टिंग में ले लेंगे। फिर 6 क्वेश्चन है। Wait for snowman. Top rope tree. When should we use the if activity within a workflow in Studio? When the body perform an activity, a series of activities specified in the body section of each element. When we want to process to take one of two different courses of action depending on whether specified condition is met. Here, ये वाला बराबर है। How do we open the project's location on the machine Studio?
क्लिकिंग प्रोजेक्ट पैनल एक्सप्लोर। नहीं नहीं, सेकंड वाला है, फाइल एक्सप्लोरर का है। How can we run the project in debug mode in Studio? By clicking debug ribbon tab, clicking debug file list, selecting run file, debug file, and by selecting debug project. ये बराबर है। Following panels in Studio in correct description. Data manager panel, activities panel. We can manage activities to the current for contextual, unable to view the change properties. ये properties panel है। Data manager panel loads various types of data. Designer panel, project file dependencies, configure. Output panel, see log messages. On project panel, we can view available activities. और दो गलत आ गए, तो ये डिजाइनर पैनल का है। What is the one way to add an activity to workflow in Studio? By clicking activities. What Studio activity can you use when working with files in a folder and want to repeat one or more activities with individual for each file in folder? हम फेल है ना इसमें, 67%। ओके, ये हम कल करेंगे। अभी मुझे भी जाना है, तो मैं अभी ये स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।